oops, sorry. ठीक है. So our topic in this page is jQuery. ठीक है. Thanks. ठीक है. So we are starting with jQuery. So what is jQuery? jQuery क्या है? It's the most popular JavaScript library. So now it's a library and library क्या होता है? It's a collection of functions. So basically बहुत सारे functions आपको already club करके एक single file में मिल जाते हैं. That file is called a library. So like हम जावास्क्रिप्ट में बहुत से फंक्शन यूज करना चाहते हैं, तो इट्स बेटर कि हम उन सारे फंक्शंस को ग्रुप कर ले एक लाइब्रेरी में. सो ऐसे ही एक फ्री एंड ओपन सोर्स लाइब्रेरी जो है आपकी, दैट इज कॉल्ड jQuery. jQuery 2006 में फर्स्ट टाइम आया था एंड नाउ इट इज मैक्सिमम साइट जो है वो jQuery को यूज करती ही है. ठीक है. सो jQuery क्या है? द मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी. सो इट्स एन ओपन सोर्स एंड द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड. So the official site is jquery.com. So jquery.com इनकी official site है. यहाँ से हमें jQuery को डाउनलोड करना है. So I'll tell you first of all how to download jQuery. But before that, the question is why we need jQuery. jQuery जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई करता है. सो बेसिकली इन जावास्क्रिप्ट हमें लंबे लंबे फंक्शंस बनाने पड़ते हैं. jQuery आपको कुछ बिल्ट इन फंक्शंस दे देता है. सो jQuery हैज वाइड रेंज ऑफ एक्शंस लाइक इवेंट हैंडलिंग को इजी कर देता है, डॉम इंटरेक्शन को, डॉम मैनिपुलेशन को, एनिमेशंस एंड एजेक्स कॉल को ज़्यादा सिंप्लीफाई एंड ईजी कर सकता है. लाइक सी, these are multiple options, these are single options, and ये हमने jQuery से बनाया है. And we can also use slide up slide down effect jQuery में, fade effects, animations. So these are some basic applications of jQuery. Now the first thing is that we have to download jQuery. So jQuery browser में embedded नहीं है, so browser knows only JavaScript. Browser को सिर्फ JavaScript समझ आता है. Sorry. सो ब्राउजर को सिर्फ JS समझ आता है एंड ब्राउजर को jQuery समझ नहीं आता. सो टू दैट फॉर दैट हमें सबसे पहले ब्राउजर को jQuery समझाना पड़ेगा. सो हाउ, यहाँ तो हम jQuery के सारे फंक्शंस यहाँ लिख कर दें, और यू हैव रेडीमेड लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी को जस्ट इंटीग्रेट कर दो. सो देयर यू कैन सी आई एम यूजिंग jQuery 3 वर्जन एंड jQuery 1 वर्जन. तो jQuery के 1, 2 एंड 3 अलग अलग डिफरेंट वर्जन हैं. डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि jQuery के जो फर्स्ट सीरीज है 1 वर्जन हैं, ये IE8 एंड i7 जैसे आउटडेटेड ब्राउजर को भी सपोर्ट करेंगे, पर jQuery 3 इज सपोर्टेड ओनली ऑन IE9 एंड अबव. सो इफ यू वांट कि आपकी वेब एप्लीकेशन i8 एंड बिलो पे भी चले और मॉडर्न पे भी चले, तो देन यूज jQuery 1. अदरवाइज सिर्फ मॉडर्न ब्राउजर के लिए चाहिए तो यू कैन यूज jQuery 3.1. फंक्शनलिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं jQuery 1 कॉपी करता हूँ एंड इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ. नाउ हम इसे ब्राउजर में ओपन करते हैं. I'll open my console. So there is a jQuery function, ठीक है, and function is returning something. So basically jQuery लोड हो चुका है. And now, so this is the function to call jQuery, and इसका एक शॉर्टकट होता है $. So basically jQuery के केस में $= is double equal to jQuery. Both are same. See the file now. This is your jQuery file जो कैश से आ रही है. So if I disable my browser cache, so you can see the size ये सिर्फ 33.4 KB की है. gzip होके actual size is 94.9 KB, and right now the loading time is 302 millisecond. It's 270. तो average loading time इसका 100 millisecond है. Check this time. तो this is the average loading time 0.1 second, यानी कि 100 millisecond के अंडर आपका jQuery की फाइल लोड हो रही है. सो हम लोग jQuery कहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं? code.jquery.com, द ऑफिशियल jQuery CDN से. नाउ if I'm using jQuery 3 version, so see the only difference is this file size is 33.4 and this file size is 30 KB. तो jQuery 3 थोड़ी सी around 10% lightweight होगी as compared to jQuery 1, but jQuery 3 की i8 ब्राउजर की सपोर्ट 0 है and jQuery 1 i8 पे सपोर्ट करता है. So we'll always prefer the minified version, क्योंकि minified version आपके फास्ट लोड होते हैं. तो प्रोडक्शन के लिए ऑलवेज यूज मिनिफाइड वर्जन. ठीक है.
There are some other ways to include jQuery like Google CDNs. So मैं now इसी CDN को replace कर रहा हूँ with Google CDN. So Google CDNs we can opt. So the only advantage of using Google CDN is कि Google CDN थोड़े से fast हैं, थोड़े नहीं काफ़ी fast है. So you can see even the cache is disabled, the average loading time is under 30 milliseconds. So Google CDNs काफ़ी fast है. So I prefer using for performance, prefer Google CDNs. और offline के लिए you can do one thing, आप इसी कोड को अपने .js फोल्डर में सेव भी कर सकते हैं so that आप offline भी इस पर वर्क कर सको, because this is an online version. ओके, सो बाय यूजिंग दिस सीरियल्स हमारे पेज पे jQuery चल रहा है. सो jQuery कॉल करने का फंक्शन नेम होता है jQuery. ब्रैकेट कम्स विद द सपोर्ट ऑफ jQuery. तो ब्रैकेट में आपको jQuery सपोर्ट मिलेगा. सी यू कैन टाइप डॉलर. सो डॉलर इज अ फंक्शन. इफ यू क्लिक दिस यू कैन गो टू द official API of jQuery site. So this is the official block of jQuery. What is jQuery function? So jQuery function कॉल करने के दो वे हैं. फर्स्ट इज डॉलर एंड सेकंड इज jQuery. ठीक है. टू चेक द वर्जन go to browser console jQuery.fn.jQuery. So you can get a string. So this is a string which is 1.12.4, the latest version of jQuery 1, and the actual 3 version is 3.3.1. So you can type, you can include any one of them as per your requirement. I prefer for i8 use jQuery 1.12, and for the modern apps only use jQuery 3.3.1. Now, so what jQuery prefer? We can directly write our code in jQuery. Like how? Dollar means jQuery, h1 means my document element. So like in JavaScript, use document.querySelector and document.querySelector all, or document.get element by ID, get elements by class name, get elements by tag name. In jQuery, we only use dollar selector. So dollar means all h1 elements dot text function, and within the text we have a string argument which is hello jQuery. Now I'm going to save this page and refresh my page. See, this has been updated now. So jQuery क्या कर रहा है? $h1 जितने भी h1 है उन सबको पिक कर रहा है and उनका text content को hello jQuery assign कर देगा. Now if there are multiple h1 elements, you can see all are working. So we have to write less code. So jQuery की official tagline क्या है? Write less, do more means come coding and more functionality. And one extra feature of jQuery is if you are using jQuery 1, you will get more browser support. आपको cross browser issues की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, unlike vanilla JavaScript. So this is my first code जहाँ हमने h1 के text को, so in my source code we are writing jQuery, but in a DOM we can see hello jQuery. तो Java jQuery ये काम कर रहा है. But we'll always prefer a jQuery code in $document.ready function. तो यहाँ पे jQuery prefer करता है एक ready function. So what is ready function? चलिए let's start. So dollar means jQuery, documents means my web document, dot when my web document is ready, a callback function. Now ये कैसे work कर रहा है? Let's see. This is console.log1 and this is console.log2 and this is console.log2 and this is console.log3. ठीक है? So we have three console.log. First is 1, then 2 within ready function, and then we have 3. So you can see the output is 1, 3 and 2. ठीक है? पहले 1 चला, देन ये तो रेडी पे चलना था, तो ये आपके जो हम जावास्क्रिप्ट इवेंट लूप कहते हैं इन नोड, ये इवेंट लूप में है एंड दिस इज अ कॉल बैक फंक्शन. तो ये इवेंट लूप में है, तो इवेंट लूप कब चलेगा? जब मेन थ्रेड फ्री हो जाएगा. सो दैट मीन्स 3 के प्रिंट होने के जस्ट बाद ही आपका 2 प्रिंट आउट होगा. एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट विंडो डॉट ऑनलोड. So right now we can see 1, 2, 1, 3, 2, 4.
तो विंडो डॉट ऑन लोड सबसे एंड में चलता है जब पूरी वेब पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट की विंडो लोड हो जाती है। सो बेसिकली विंडो डॉट ऑन लोड कब चलता है, जब आपके सारे मीडिया लोड हो जाते हैं, लाइक आपके पिक्चर्स भी लोड हो जाए, आपके वीडियोस वगैरह या फ्रेम्स आई फ्रेम्स का कंटेंट भी लोड हो जाए। बट रेडी सिर्फ किसका वेट करता है, द लास्ट एलिमेंट का, लाइक एचटीएमएल एलिमेंट। वो एचटीएमएल लास्ट एलिमेंट राइट नाउ विच इज एचटीएमएल, वो उसकी क्लोजिंग के जस्ट बाद ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट द आउटपुट इज 132। नाउ one last example, I'm writing console.log 4. Now we can see the output 1, 3, 4 and 2. So as I have already told you कि ये last element का wait करेगा, and now the last element is script tag. So first 1, then 3, then 4 and then ready. तो ready कब चलता है, last element की loading के बाद. So that's why we always prefer our code within ready function. Now ready लिखने के भी दो तरीके हैं. This is the first way and इसी का shortcut होता है document sorry, this is the shortcut of ready. So we'll prefer कि हमेशा अपने कोड को ready function में ही लिखना चाहिए. So this is how we can include jQuery with any web page. Now जितने आपके multiple pages होंगे, you have to include this JS file. Make sure कि ये script हमेशा script के jQuery function से पहले ही होनी चाहिए. Like we can see ये top पे है. So some people prefer कि jQuery को हम लोग head में add कर देते हैं like this. तो jQuery तब भी चलता है. एंड सम पीपल प्रेफर कि हम इसको बॉडी में लिखते हैं, jQuery तब भी चलता है. आई प्रेफर ऑलवेज यूज योर स्क्रिप्ट इन बॉडी, मूवी कब, द लास्ट एलिमेंट लाइक कंटेनर के क्लोजिंग के जस्ट बाद, सो दैट पूरे कंटेंट के लोड होने के बाद ही jQuery एग्जीक्यूट होगा. ओके तो चलिए we'll move ahead. This is the jQuery ready function. This is the shortcut of ready. Now how to check whether jQuery is working or not. So for that आपको क्या करना है, go to your browser console and type jQuery. अगर कोई function return होगा तो that means jQuery work कर रहा है. Now let's say jQuery browser पे नहीं है, so this function will not work. Now type jQuery. You will say this, jQuery is not defined, and but don't use dollar because dollar एक reserve keyword भी होता है इसमें. So dollar से नहीं, you have to check with jQuery. अगर jQuery function होगा, so you can see some output. So make sure jQuery होगा, then only you can use jQuery. And jQuery is exactly equal to dollar. So see, dollar double equal to jQuery is true, dollar double equal to jQuery is true. And to check the version, jQuery dot fn dot jQuery. So this will return jQuery's version. Now don't use two jQuery CDNs or files. I'll tell you how. Why? Now let's say I'm using two jQuery in my page. So first है हमारा jQuery 1.12.4 and the next jQuery is 3.3.1. Now again see ये दोनों work कर रही हैं, see दोनों ही load हो रही है, but browser will support the last one only. So JavaScript में functions override करते हैं when we are using equal to operator. So same thing is happening here कि jQuery.fn.jQuery is returning jQuery 3.1. क्यों? क्योंकि वो last था. And now we can see it's jQuery 1.12.4. So पेज पे कभी भी दो वर्जन ऑफ jQuery ऐड नहीं करने, you have to use a single one. जैसे कि jQuery 1.12 अगर आप यूज करोगे so don't use jQuery 3, या अगर आपको jQuery 3 ही यूज करना है so don't use jQuery 1. But for IE 8 and above I prefer use jQuery 1 और 1 का भी latest and stable version 1.12 है. So this is the official site जहाँ से आप jQuery डाउनलोड करते हो. But Google CDNs are performance wise more fast. That's why मैं Google CDN को use कर रहा हूँ. So
This is the uncompressed version, which means minified. This is the development version, which means beautified version. So I always prefer in production sites use compressed version means minified. For development stage, you can use non-minified version. So these are some official CDN providers: Google CDN, Microsoft CDN, JSN, JS, Delivery. These are the all past release of jQuery. जैसे you can see jQuery 3, jQuery 2, jQuery 1, and to see all the versions, click this. तो यहाँ पे आपको jQuery के सारे versions की list मिल जाएगी. Like the latest version of 1 is 1.12.4. This is the link of uncompressed means development version and minified means production. So during development you can prefer this, but during production stage always prefer the minified version. So jQuery का integration बहुत simple है. You just have to add a single file. Now what is the only drawback of adding jQuery in your code? jQuery ऐड करने का only drawback क्या है कि jQuery थोड़ी सी heavy हो जाती है. jQuery के ऐड करते ही आपकी साइट heavy हो जाएगी, क्योंकि jQuery will consume some space. So you can see if your cache is disabled, jQuery 0.1 millisecond load ले रहा है, but usually Google CDNs are good in performance, so you can see the average loading time is under 30 milliseconds, which is very fast for most of the sites. ठीक है, so this is the session regarding jQuery download, that how we can add a jQuery ready function. What is the use of ready function? Check jQuery and in your browser, how to check the jQuery version. And there's one more thing in jQuery, and that is called jQuery no conflict. So there is a function in jQuery which is $no conflict. Now might be ऐसा हो that we are using another library जहाँ पे डॉलर कीवर्ड का मतलब कुछ और होगा. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है that अगर हम jQuery यूज कर रहे हैं, so we cannot use another library. Like Control N, I'm using another library where so my library name is math.js. So there we have a math function. So dollar, so function space math is, so this is the function name is math. Now we are going to, sorry, the function name is dollar. Now we are going to link this file. Math.js. Now if we type dollar, so dollar means, so now dollar is not jQuery because, but jQuery, so basically dollar is not equal to jQuery now, because dollar here is our math function and jQuery means a jQuery function. So for to avoid confliction of this, jQuery is having a built-in function which is dollar dot no conflict. This is dollar dot no conflict. So after using dollar dot no conflict, dollar is actually your math function and jQuery is your jQuery function. To use jQuery now, use jQuery, not dollar. And everywhere we have to replace dollar with jQuery. See, again our code is working. So why when we use dollar dot no conflict, when a dollar function is conflicting with other functions, other nahi ho raha, so you can avoid this. And then again we can use dollar or jQuery. Okay? So this is jQuery no conflict function. So after jQuery dot no conflict function, we cannot use dollar क्योंकि dollar अब आपका jQuery function नहीं है. So this is how we can add jQuery in a web page. ठीक है? So this is all about how we can add jQuery, how to use jQuery, how to include jQuery, what are the precautions while including jQuery, and jQuery की cross browser support jQuery को call कैसे करना है. ठीक है? So next Sir, session में,
सर टू इंक्लूड द jQuery हमें बस ये कोड कॉपी करना है? एग्जैक्टली, यू ओनली हैव टू लिंक दिस फाइल, ये फाइल जैसे मैंने We दिया don't है। have to download jQuery from the नो, browser. you can also download, but that is only for offline version, like for let's suppose आपके पास इंटरनेट नहीं है, so you can download an offline copy. Okay. So that is only required अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है always, but most of the sites में ऐसा नहीं होता, like this is a site, see यहाँ पे भी हम CDN यूज़ कर रहे हैं, but this is offline download. So offline you can only use अगर आपके पास 24/7 इंटरनेट नहीं है, but if you have, then आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है?